Hello friends, welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law in Veins. And yes, those who haven't subscribed yet, please do like, share and subscribe. Keep supporting for the videos. And yes, today we are going to start a very new video of a legal maxim, that is of caveat emptor. Okay, I think you must have heard about this word caveat emptor many times, I guess in tort or in contract many times. So today we are going to start this topic. So what does it basically means? It means let the buyer be aware, or buyer be aware. This is kind of, you can say, a warning to the buyer. So yes, starting from the very beginning, it means let the buyer be aware. So basically it is the principle that the buyer alone is responsible for checking the quality and suitability of goods before a purchase is made. It means कि जो बायर है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है कि वो कैसी क्वालिटी के गुड्स परचेज कर रहा है, वेदर दैट प्रोडक्ट ही इज़ बाइंग वो सूटेबल है या नहीं, वो उसके क्राइटेरिया को मैच करता है या नहीं जैसा वो खरीदना चाह रहा है. So this is basically a doctrine of caveat emptor, and it is a integral part of the Sales of Goods Act. I think you must have read in section 16 of Sales of Goods Act. So this doctrine attempts to make the buyer more conscious of his choices. It is the duty of the buyer to check the quality and the usefulness of the product he is purchasing. ये buyer की duty है कि वो जो products खरीद रहा है वो check करके खरीदे कि वो कैसे प्रोडक्ट्स खरीद रहा है और वेदर वो जो प्रोडक्ट है वो यूजफुल है या नहीं. ठीक है, इट इज़ द प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट टर्न्स आउट to be the defective or does not live up to the potential, the seller will not be responsible for this. अगर जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव होता है या फिर वो इट डज़ नॉट लिव अप टू द पोटेंशियल, तो इस चीज़ के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. अब नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट. सबसे पहला एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं, फिटनेस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर द बायर्स पर्पस. When the buyer informs the seller of his purpose of buying the goods, it is implied that he is relying on the seller's judgment. It is the duty of the seller then to ensure the goods match their डिज़ायर्ड यूसेस. इट मीन्स कि जब बायर इन्फॉर्म करता है सेलर को कि उसको किस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए या किस टाइप का गुड्स चाहिए, देन ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि उसको वैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करे. सो देयर इज़ अ सर्टेन एग्जाम्पल इन दिस. से फॉर एग्जाम्पल, ए गोज़ टू बी टू बाई a bicycle. He informs B he wants to use the bicycle for mountain trekking. If B sells him an ordinary bicycle, then that is incapable of fulfilling A's purpose. The seller will be responsible. So इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा बिकॉज ही इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द बाइसिकल फॉर माउंटेन ट्रेकिंग. ही जस्ट प्रोवाइडेड अ बाइसिकल फॉर नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्पस. सो दिस वॉज. सो या स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड वन सेज दैट कि जब जो बायर है हमारा ही बाइज अ प्रोडक्ट अंडर अ ट्रेड मार्क या फिर किसी भी ट्रेड नेम के अंदर या फिर वो किसी सर्टेन ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदता है, तो इन दिस केस सेलर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूजफुलनेस और क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. बिकॉज दिस इज़ ऑब्वियस गाइज, बिकॉज वो जो प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड किया जा रहा है वो दैट इज़ प्रोडक्ट of certain brand or certain trademark. So for this the seller will not be held responsible. So the next one is, जो goods है हमारा sold by a certain description. So when the buyer buys a good based on only the description, there will be an exception. If the good do not match to the description, then in such case the seller will be held responsible. तो इस केस में seller हमारा responsible होगा because he is not providing the good जैसा उसने describe किया था. If he described a good कि ये good कि ये जो product है ये certain quality का है या फिर ये certain this will be valid for this particular year and he is not providing for that, then इस केस में he will be held, the seller will be held responsible. So the next one is goods of merchantable quality. मीन्स कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट है किसी पर्टिकुलर गुड के लिए, ठीक है, एंड दैट गुड is not capable of passing the market standard, then for that criteria the seller will be held responsible. The seller who is selling the goods by description has a duty of providing goods of merchantable quality that is capable of passing the market standards. So if the goods are not of merchantable quality, then the buyer will not be the one who is responsible. Then in this case the seller will be held responsible. Okay, so the fifth one is sale by sample. Sale by sample क्या होता है?
If the buyer buys his goods after examining a sample, then the rule of doctrine of caveat emptor will not apply. If the rest of the goods do not resemble the sample, the buyer cannot be held responsible. अगर जो complete goods है वो sample को resemble नहीं करता है तो इस case में buyer will not be held responsible. For example, A places an order for 50 car toys, ठीक है, which should be in red in color. जो वो sample check करता है वो red color का होता है, but उसको जो provide किया जाता है जो rest car turns out to be orange. Here the doctrine will not apply because B will be responsible. इस केस में जो seller होगा हमारा वो responsible होगा because he provided the red car in sample, but in real he provided all the orange cars. So in this case the seller will be held responsible, not the buyer. So guys, this was it. So okay guys, so the last one is sale by description and sample. So if the product turns out not to be the same जैसा describe किया गया है या फिर जैसा sample में show किया गया है, so in this case the buyer will not be held responsible. इस case में जो हमारा seller होगा he will be held responsible. So this was all about caveat emptor with all the exceptions. Hope you like this video. If you do like this video, then please do like, share and subscribe. Thank you so much for watching the video. Please keep supporting and stay tuned.